Hello. A special announcement goes out to all the volunteers. The President's movement has started. Request you to get all the attendees from wherever they are and be seated in the next 20 minutes, please. हमारे प्रेसिडेंट का मूवमेंट चालू हो गया है. जितने हमारे वॉलंटियर हैं, सबसे अनुरोध है कि वो जितने यहाँ पर हमारे अटेंडीज़ हैं, उनको अपनी अपनी जगह से ले आएं और 20 मिनट में अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें. शुक्रिया. सभी भाई बहनों से निवेदन है कि कृपया करके शांत से बैठ जाएं. कुछ ही मिनटों में प्रेसिडेंट साहिबा और बाकी सब डिग्निटरीज यहाँ मंच के पास आएंगे. May I request all of you all to please be seated in peace, thinking about the inner peace and about the world peace. విచ్చేసిన అతిథులందరికీ, బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అందరికీ దయచేసి మీరందరూ ప్రశాంతంగా కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కాసేపట్లో మన మధ్య గౌరవనీయులు ప్రెసిడెంట్ గారు విచ్చేస్తున్నారు. I once again request all of you all to please be seated. Respected dignitaries, the world leaders and the speakers will be here any moment on the dais. We'll be starting the program within a few seconds from now. Thank you. A very, very warm welcome, ladies and gentlemen, on this little warmish afternoon. We are all gathered here for the Global Spiritual Mahotsav being organized by the Ministry of Culture in association with the Heartfulness Institute.
We've had some wonderful sessions in the morning, and a big thank you goes out to all the participants for making it so memorable. Our late afternoon sessions are commencing now with the Honorable President's address coming on a little later. Before that, we have a whole host of programs also lined up for you. Scintillating projection mapping and a cultural show too of song and dance, just to keep you glued to all your seats. The next session has speakers from different walks of life. We have for you Swami Gaurang, Swami Muktananda, Devi Chitralekha ji, Shri Janardhan Bothe, Upasna Kamineni Konidela, Rashtra Sant Param Gurudev, Namramuni Maharaj Sahib, His Highness Pujya Swami Chidanand Saraswati ji. We are running according to a little schedule and a little hard-pressed for time. So although we have such interesting speakers and panelists coming up, request everyone to kindly stick to your schedule. Thank you. I would now like to invite the first speaker, the address by Swami Gaurang. Swami Gaurang, a devoted servant of Lord Krishna's teachings. With unwavering dedication, he spreads the message of love and devotion. His charismatic presence and deep wisdom inspire spiritual speakers. He serves on ISKCON's governing body, commission, and is a member of the board of founders of Rishihood University. Ladies and gentlemen, please give it up for Swami Gaurang. Should I speak from here? Yeah, okay. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Today, we are very fortunate to be celebrating this World Spirituality Festival at Heartfulness Institute. The world is going through a major crisis with more than 300 million people across the world experiencing stress and depression symptoms, more than 3 million people experiencing addictions due to alcohol, 1 billion people across the world experiencing addictions due to cigarettes, and overall, the climate change is looming large. And over the last 120 years, the overall carbon dioxide content has grown by more than 20 times. We are faced with a situation where the internal turmoil of all the souls within this world is affecting people externally and affecting the world. Spirituality is that element which connects all of us together on one platform. And therefore, the internal conflict is caused by 8 things. First, our identity with the body. The body is young, old, healthy. Second, our identity with respect to our husband or wife. Third, the identity with respect to our children. Fourth, the identity with respect to our home. Fifth, identity with respect to our vehicles. Sixth is identity with respect to our wealth. Seventh is our identity with respect to social status.
And eighth is our identity with respect to our influence or career. And so the Bhagavad Puran describes all of these internal conflicts beautifully in a very simple shloka saying, Atmajaya sutagara pashudravina bandhushu rajyecha vikale nityam virudham mamatam jaho. And therefore, all of us are experiencing problems and challenges because of misidentifying with these eight. And as these identities change constantly, it imposes great degree of fear upon all of us, and fear is caused by change. The only cause of fear in this world, as described in the Gita, is change. And the change we are talking about is the change in all these identities. When I was studying in IIT, at that time when I was in my last year, one of my friends tried to commit suicide. And when I approached him and said, why did you try to commit suicide? He said, every exam I was getting the gold medal, but in this exam I got the silver medal. I could not adjust to the change in that identity. I got so traumatized, I tried to commit suicide. In the same exam, 4 or 5 of my other friends failed in 4 or 5 subjects, but they were moving around the campus peacefully, blissfully, as if nothing happened. I approached them and said, you have failed in 4 or 5 subjects. Still, you are not feeling any shame. You are moving around the campus peacefully. How is that? What is your philosophy in life? And they said, our philosophy is simple. College में घुसना अपना काम है, निकालना college का काम है. So we realized that stress is caused due to the gap between expectation and reality. And so the Gita explains, if we commit to nothing, then we are distracted by everything. Don't compare yourself with others. Only compare yourself with what you were yesterday and your own self. Happiness is not about accumulating things, but happiness is about minimizing your attachments. Tolerance is to give up the war on reality, and discipline is the fusion of intention with action. Here, all of us are assembled to understand that yes, as a global family, we have to attract people to come to spiritual places to learn how they can convert their home into temple. And therefore, we want in every home people practicing spirituality. Otherwise, family as an institution is going to break down. Goldman Sachs came with a report that between 2015 to 2025, the infrastructure investment required in India would be up to $1.3 trillion. And they said out of that, $800 billion would come from family savings. And if there is no family feeling, there will not be any family saving. And to create family feeling, one has to have a spiritual bonding between members of the family. I was giving a lecture in United States, and one student came up to me and started speaking in Hindi. I looked at him and said, you look American, you speak Hindi? Yes, he said, I was growing up in a wealthy family, but when I was 17, I told my dad, you gave me everything in life except experience of family, because when I was 2 years old, you were divorced. I want to experience what is family, what is the affectionate bond between family members. His father said, I can't give you that experience. Today, Luxembourg has a divorce rate of 88%, Spain has a divorce rate of 65%, France has a divorce rate of 55%, Russia has a divorce rate of 51%, America has a divorce rate of 46%, global divorce rate is 44%, India still has the lowest divorce rate at only 1%. And so his father said, go to India. He flew into India, came to a city, saw the sign, paying guest available. He approached that family and said, allow me to live in your family as a paying guest for 2 years only. I just want to experience the close-knit bond between family members, observing festivals, having food together. If you allow me to live in your house for 2 years only, every month I will give a monthly rent of 1 lakh rupees every month. That family said, why 2 years? Stay whole life. And they said, if you have other friends also who want to experience, call them also.
We underestimate the power of family, and families can only be sustained if everyone comes together around a spiritual purpose, a family which prays together, stays together, and the Bhagavad Gita, the Srimad Bhagavad Puran, the Upanishads are all saying the same message so that we can come together, explore, experience, and excavate the deep spiritual ecstasy within. I'm very honored to be in the midst of spiritual powerhouses here who come from different traditions, but we are all aligned and united around the same purpose, Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you all very much. Hello, check, check. Thank you so much, Guruji. May I now request and invite Swami Mukundananda Jagadguru Kripaluji Yog, a senior disciple of Jagadguru Sri Kripaluji Maharaj. May I request the volunteers to escort our speakers to this side of this, on this podium. Is taraf aa jaiye. May I request the speakers to please come on to the podium this side. That is the left side. Ji haan. A senior disciple of Jagadguru Sri Kripaluji Maharaj, founded Jagadguru Kripaluji Yog in 2009. The JK Yog is a spiritual and charitable non-profit organization based in the United States. Please जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा स्वामी मुकुंदानंदा जी के. So another announcement goes out. From each organization, request one person to sit in the VVIP areas. The others, please find a seat behind. We are very, very short of seats right here in front, and kindly request you to do that. Thank you. Namah Kamalnabhaya Namah Kamalmaline Namah Kamalpadaya Namaste Kamalekshana Yo Brahmanam Vidadati Purvam Yo Vai Vedanscha Prahinoti Tasmai Tagvam Ha Devamatma Buddhi Prakasham Mumukshur Vai Sharanamaham Prapadde. उपस्थित आदरणीय संत समाज एवं समस्त उपस्थित भक्त वृंद, all of us as members of the one human race inhabiting this planet Earth have the combined responsibility of ensuring peace at the world level. Yet, even though we realize this is such a noble and cherishable goal, it still remains elusive. In the last 5,000 years of recorded human history, at least 5,000 wars have been fought. The worst of these came to an end in 1945, when unitedly the world realized the need for world peace and established the United Nations. And yet, despite that, wars have continued. Is world peace actually possible? The world is not an indivisible entity,
but it is constituted of individual people like you and I. If we want peace at the global level, we need to have peace at the micro level. And that is why world peace comes through peaceful pieces. When each piece is peaceful, that will ensure world peace. And that is why I'd like to congratulate the Ministry of Culture of the Government of India for such a wonderfully conceived theme for the Global Spirituality Mahotsav, Inner Peace to World Peace. How do we achieve inner peace? Is it possible to achieve a peace that is independent of externals, that will be retained despite adversities, that nobody can snatch away from us? It is definitely possible, and that is what the ancient books of wisdom have taught us. They say peace has to be discovered inside, within your mind. This mind is bondage, and the mind is the cause of liberation. The mind is such a powerful thing. It can make heaven even in hellish circumstances. And in the most celestial circumstances, it can make you experience the torments of hell. And that is why this mind is the key to peace. Now, when that mind is agitated by anger, greed, desire, hatred, envy, then no matter how positive the externals, peace still remains elusive. The Bhagavad Gita explained to us the peace formula. Shri Krishna said, Vihaya kaman yas sarvan pumans charati nispriyaha nirmamo nirahankaraha sashanti madhigacchati. The Gita states that if we can give up desires, if we can give up pride, we will then find true peace. These desires are such, they have absolutely no end. Yat prithivyam vrihiyavam hiranyam pashavastriya nalmekasya paryaptam tasmat trishnam parityajet. The Bhagavatam states that if one person was to have all the objects of enjoyment of the world, desires would still not come to an end. They would continue rising and rising. And that is why one needs to give up desires. Likewise is the pride. And the root of both of these is the ego. There was once a businessman in Hyderabad. He felt he became detached and he left to live in the Himalayas. He went to a monastery where he was given a hut, and there he started practicing sadhana. And his sadhana reached a reasonable level of proficiency until the monsoon came. And along with the monsoon, the sounds of nature, the frogs were making sounds, the crickets were making merry. This man, sitting in his meditation, felt he was getting disturbed. And so, finally, when his tolerance was crossed, he went to his window, opened the window, went out and screamed, "Silence!" Now, because his sadhana had reached such a level, when he spoke, nature also listened to him.
and all the frogs, cricket, everything became quiet. He went back to sit in meditation, but he discovered that he was still not able to meditate. Another voice was disturbing him, and this time the voice was from inside of him. It was the voice of his conscience. What I did, was it right? Was it wrong? Now, no matter how much he tried, he was unable to silence it. So finally, he went to his window, again opened it, and said, "Begin." The frogs, the crickets, they all started screaming. He came back to sit in meditation, but this time he had found perfect peace. This was the peace from within, from inside of him. So if we can find peace inside of us, that peace is irrespective of the externals. And that peace nobody can take away from us. How will we achieve that peace? The scriptures tell us the basic reason for anger, greed, desire, hatred, envy is ignorance. Ajnanamevasya hi moola karanam. If some fortunate soul can remove the ignorance from within, that person will achieve peace. So this mind is such a powerful instrument. We need to learn how to purify it. The essence of spirituality is the purification of the mind. And how do you purify the mind? By attaching the mind to the all-pure, to the Supreme. You know, when we were little children, we heard this phrase, "No God, no peace." Where there is no God, there is no peace. And no God, no peace. When you come to know God, you will come to know peace. So when we attach our mind to the all-pure, we will achieve purity of mind. And that purity of mind will help us achieve true peace. I am delighted that such a conference has been held, has been organized. This message needs to be conveyed to the whole world because India is at such a juncture today where we are on the crossroad of modernization. As the fifth largest economy, soon to become the third largest, we are destined to take our place on the world stage. And as a world leader, we will soon become the thought leader of the world as well. India has a heritage of tolerance, of inclusiveness, of wisdom, of inner cultivation. 2,500 years ago, Jagadguru Shankaracharya, he asked the question, Jagat Jitam Kena, who shall conquer the world? And the answer he gave was Mano Hiyena, that person who conquers their own mind. So if we wish to achieve peace, we need to declare war. But this is not the war that is fought on the outside. It is a war we need to fight within ourselves. The war against the demons of anger, greed, desire, hatred, envy. We are finding demons outside of ourselves, and the biggest demons are lying within ourselves. So when we can achieve peace on the inside, each and every one of us, we will then be able to achieve peace on the outside. Thank you all very much. Namaste.
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी मुक्तानंद जी. Our next speaker is Devi Chitralekha ji. Devi Chitralekha, an embodiment of devotion and wisdom, with grace as a guide and compassion in her heart. Her luminous presence inspires seekers far and wide. A beacon of spiritual enlightenment, she leads souls towards the eternal divine light. Ladies and gentlemen, please welcome Devi Chitralekha ji. हरे कृष्णा. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. उपस्थित समस्त संत समाज, सारे विश्व से आए हुए ऑल दी स्पिरिचुअल लीडर्स, मेरे लिए ये बहुत खुशी का विषय है. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी हेयर. एक ऐसा मंच जो पूरे विश्व में शांति का संदेश, हार्टफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के बारे में बता रहा है, सिखा रहा है. क्योंकि इतने सारे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, सबके जीवन के अनुभव से और उनकी मुख की वाणी से हमेशा हमने यही सुना है कि जीवन में एक चीज़ है जो सबसे कीमती है और वो है शांति. क्योंकि अक्सर इंसान जीवन में सब कुछ कमा लेता है, बहुत ऊपर पहुंच जाता है, नेम, फेम, मनी, सब कुछ मिल जाता है. एंड देन एट द एंड जब उसकी मौत होती है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो सब उसके श्रद्धांजलि में जाकर के हाथ जोड़ कर के एक ही बात मांगते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे. इट मीन्स कि लाइफ में उन्होंने सब कुछ अचीव किया, बट एक ही चीज़ रह गई, वो थी शांति. और उसी शांति को सारे विश्व में पहुंचाने के लिए हार्टफुलनेस एक बहुत बड़ा काम कर रहा है. और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, दे ऑल आर द लीडर्स ऑफ द फील्ड, एंड व्हाट दे आर डूइंग वो प्रणाम के योग्य है. क्योंकि इस दुनिया में अपनी शांति के लिए एवरीबडी इज ट्राइंग, लेकिन पूरी सोसाइटी में पीस हो, इसके लिए जो लोग कोशिश करते हैं आज वो सारे यहाँ उपस्थित हैं. सेल्फिश रीजंस से कोई अपने आप को सुखी रखना चाहे या शांत रखना चाहे, दैट्स अ स्मॉल थिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन सारा विश्व सुखी रहे, दैट्स द आर्ट ऑफ लाइफ. इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो. जब भी हम भारतीयों ने बात करी, नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट भारत, नॉट जस्ट आवर सोसाइटी, जब भी हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट पूरे विश्व के बारे में. और आज उसी विश्व में शांति की स्थापना हो, हर दिल में पीस हो, उसी के लिए आज ये सारे स्पिरिचुअल लीडर्स, आध्यात्मिक गुरु, हमारे महापुरुष, संत समाज और आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर हैं उपस्थित हुए हैं. मैं इस संस्थान में एक छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला.
ये मेरी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं कि इस दुनिया में जब कोई अच्छा काम करता है और आप उसके लिए एक बूंद अगर उसमें अपनी कुछ आहुति दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस समस्या के सल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक की बात किसी ने कही है कि अगर आप किसी समस्या का समाधान नहीं हो, इसका मतलब आप खुद ही समस्या हो। हमें सल्यूशन बनना है, प्रॉब्लम नहीं बनना है। और सल्यूशन के लिए ही ये जितनी भी ऐसी बड़ी सभाएं होती हैं जिसमें हजारों लाखों लोग आते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो इसकी कामना करते हैं। तो आज पूरे विश्व में एक मैसेज यहाँ कान्हा शांति वनम के द्वारा पूज्य दाजी, उपस्थित हमारे सभी महापुरुष, पूज्य मुनि जी, आचार्य जी, स्वामी जी और जितने भी यहाँ महापुरुष हैं, सबकी अध्यक्षता में और माननीय हमारी राष्ट्रपति महोदया भी कुछ समय में उपस्थित होने वाली हैं, उनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा मैसेज, एक संदेश कान्हा शांति वनम से जा रहा है कि जीवन में कुछ मिले ना मिले, चाहे कोई बड़ा बने ना बने, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में शांति है तो तुम इस दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हो। बिकॉज सफलता के सबके मीनिंग अलग अलग हो सकते। किसे लगता है कि मेरे आगे पीछे बहुत सारे लोग हो, मेरा बहुत नाम हो, मेरा बहुत बड़ी कोई पैसा हो, लेकिन अगर दिल में शांति है, इट मीन्स हम इस संसार के, इस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। और जो आज खोई है, जैसा मैंने कहा, जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग ये नहीं कहते कि भगवान इनकी आत्मा को बैंक बैलेंस दे, भगवान इनकी आत्मा को प्रॉपर्टी दे। हम कहते भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो उनको यहाँ नहीं मिली और उसको कम से कम मरने के बाद तो हे प्रभु इनकी आत्मा जो है ये भटके ना, परम शांति का अनुभव करे। एक शब्द हम हमेशा सुनते हैं, इंग्लिश का वर्ड है रेस्ट इन पीस। हर आदमी बोलता है किसी की मृत्यु होती है, आजकल उसका एक शॉर्ट वर्जन बन गया है रिप, RIP। तो रेस्ट इन पीस, मैं कहती हूँ वाई रेस्ट इन पीस, वाई कांट वी लिव इन पीस? हमेशा मरने के बाद ही शांति क्यों है? मरने से पहले शांति क्यों नहीं हो सकती? और अगर उसके लिए शांति चाहिए और शांति देनी है तो एक बड़ी सिंपल सी लाइन है जो अक्सर हमें सुनने मिलती है, जियो और जीने दो। बहुत सिंपल लाइन है और ये लाइफ का सबसे बड़ा लॉजिक है। जियो, खुल के जियो और दूसरों को जीने दो। अगर ये करने लगेंगे तो हम खुद भी शांति का अनुभव करेंगे और दूसरों को भी शांति का अनुभव कराएंगे। क्योंकि एक छोटी सी एक स्टोरी, एक छोटी सी कहानी, देन मुझे पता बहुत सारे यहाँ अच्छे अच्छे विद्वान बैठे। एक कुम्हार था और वो मिट्टी से कुछ कुछ बना रहा था। और देन बनाते बनाते आधा बनाने के बाद उसका मन चेंज हुआ और उसने इस मिट्टी को फिर से मिट्टी में मिला के नया कुछ बनाने लगा। तो मिट्टी ने उससे पूछा कुम्हार को कि तू पहले क्या बना रहा था और तू अब क्या बना रहा है? तो उसने आंसर दिया कि पहले मैं एक चिलम होती है जिसमें लोग कुछ डाल करके पीते हैं, वो बना रहा था, लेकिन मेरा मन बदल गया, अब मैं घड़ा बना रहा हूँ। तो उस मिट्टी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मिट्टी कहती है उस कुम्हार से कि तेरा तो बस मन बदला, पर मेरी तो पूरी लाइफ बदल गई। क्योंकि मैं अगर चिलम बनती तो खुद भी जलती और जो पीता उसको भी जलाती, पर अब घड़ा बनूंगी तो खुद भी ठंडी रहूंगी और पानी पीने वाले को भी ठंडक दूंगी। जीवन में घड़ा बनना है कि जिससे हमको भी शीतलता मिले और जो हमारे पास आता है उसको भी उस शांति का, उस पीसफुलनेस का अनुभव हो सके। मुझे यहाँ आकर के बोलने का, इतने महापुरुषों के सामने, आप सबके सामने अवसर मिला, उसके लिए दाजी का, समस्त जितने भी यहाँ
टीम है, सबका, हमारी बहन प्रज्ञा जी, उनका जिन्होंने मुझे यहाँ पुश करके बुलाया कि आना ही है, एंड फाइनली सबके आशीर्वाद से आप सबका दर्शन हुआ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद देवी चित्रलेखा जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जनार्दन बोते की ओर से टुकड़ोजी महाराज संस्था के डॉक्टर ताराचंद कंताले जी। श्री गुरुदेव सेवा मंडल गुरुकुंज महाराष्ट्र से पधारे हैं और उनके साथ ये एक भजन टीम जिन्होंने सेट किया हुआ है, सामने एक भजन भी होगा उनके संस्था की ओर से। So may I request Dr. Tarachand Kantale to please come on to the dais and address the gathering. गुरुकुंज महाराष्ट्राहून आलेले ताराचंद कंटाले यांना आम्ही सागर आमंत्रित करतोय स्टेजवर। नमस्कार। Reverend Bharat Mata, Honorable President Ma'am, all the dignitaries, Honorable Daji and all the seers and sages across the globe. I am very privileged to be here to deliver the eternal message of Rashtra Santa Tukloji Maharaj on behalf of Akhil Bharatiya Sri Gurudev Seva Mandal, Gurudev Ashram, Gurukunj, Mozri, District Yavatmal from Maharashtra, Vidarbha region. Jai Guru. Dear devotees, let me tell you that Rashtra Santa Tukloji Maharaj was bestowed the title of Rashtra Santa by the first President of India, Dr. Rajendra Babu Prasad. And again, I feel very privileged to announce that after the great monk of Hindu monks, Vivekananda, Vandaniya Rashtra Santa Tukloji Maharaj is the second revolutionary social reformer from the globe who went to Japan in 1955 and he sung the bhajan. हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक है. Oh my Lord, you are one, you are omnipotent, you are omniscient and omnipresent. You are everywhere in the world. The theme of the Global Spirituality Mahotsav is Inner Peace to World Peace. Rashtra Santa Tukloji Maharaj, regarding the establishment of peace in the world says, and I quote, मंथन किया हर धर्म का, हर पंथ का, हर देश का, निकला यही मेरी समझ में सार शुभ संदेश का. जब विश्व मानव मित्र बनकर पास सबके आएंगे, शांति तभी पाएंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे. It means I brainstorm about my religion, every sect, every country. This, in my understanding, turns out to be the essence of good omen. When the entire world will become friends of each other and come closer to everyone, only then they would find peace. Otherwise, they would indeed perish from the globe. Vandaniya Rashtra Santa Tukloji Maharaj regarding the peace, he says in one of his bhajan, जगाचा भेद लयाला जाओ, शांति अखंडित राहो. Oh my God, let the distinction be eliminated from the world and let there be peace through all over the universe. आओ सभी, आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा. This is the preaching regarding the peace of Vandaniya Rashtra Santa Tukloji Maharaj, when he says all people from the world, they are welcome in our Gurudev Seva Mandal Ashram, Gurukunj Ashram.
no matter whatever religion, whatever sect he belongs, everyone is welcome in our ashram. Tukloji Maharaj gives his introduction in a very brief quotation. He says, I quote, मानवता है पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना कर्म मेरा, एक जात बनाना वर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच उच्च उठाना हटाना गर्व मेरा, गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा. Tukloji Maharaj says, humanity is my creed, humanity is my side, the welfare of all religion, removing the dilemma is my duty of all religion, creating unity is my mission of my life, working with everyone is my object, is the end of my life, removing touchables and untouchables, high and low is my pride, and raising the fallen is my heaven. गिरतों को उठाना स्वर्ग मेरा. अगेन वंदनीय राष्ट्र संत तुकलोजी महाराज सेज कि गुरुदेव ऐसी हो दया, जग का अंधेरा दूर हो, सद्धर्म सूरज की प्रभा से दम्भ सारे चूर हो, अध्यात्म और विज्ञान की सहयोग से सब हो सुखी, सहयोग समता से यही सृष्टि करे हम स्वर्ग की. ओ माय लॉर्ड, ओ माय गुरुदेव, let there be such a mercy that the darkness of the world be diminished, eliminated. Let all the pretensions be paid away with the help of Son of Righteous Religion. All should be happy by the combination of science and religion, and this universe be heaven, like with the help of the cooperation and equality. Eternal message of Vandaniya Rashtra Santa Tukloji Maharaj, because all the world is suffering from violence, nationalist, nihilism, and that this spiritual meet wants to give the message to the world that peace and peace is only the remedy, not the war. And that has been also quoted by Bhagwan Gautam Buddha. Vandaniya Rashtra Santa Tukloji Maharaj says, मीट जाए हिंसाचार सब, मानव बने सबके ही दिल, हिंसा पशुवत कर्म है, यह कह सके सब साथ मिल, ऐसा अनुग्रह हो सभी घर घर में साधु संत का, तब शांति होगी विश्व में, टुकड़ा कहे पत अंत का. वंदनीय राष्ट्र संत तुकलोजी महाराज says, all violence should be eliminated from this world. My friends, whatever the outstanding work has been done by Tukloji Maharaj, that has been practiced and implemented in this pious land by Honorable Daji. It is practiced and implemented everywhere. In 1955, when Vandaniya Rashtra Santa Tukloji Maharaj had been to Japan, and when he sang a bhajan, Har desh mein tu, har bhesh mein tu, tere naam aane ko tu ek hai, that bhajan is going to be presented by the devotees of Vandaniya Rashtra Santa Tukloji Maharaj. Thank you so much. Jai Gurudev.
जय गुरु। बहुत बहुत ही सुंदर उन्होंने गाया। तालियों से स्वागत हो जाए। आप जरा अपने ग्रुप का नाम बताएंगे प्लीज। Upasna Kamineni Konidela, Vice Chairman CSR Apollo Hospitals Group and Managing Director, Your Life. Upasna Kamineni is a well-known Indian businesswoman who holds the positions of Vice Chairperson of Apollo Life and Editor-in-Chief of Be Positive magazine. In recognition of her notable contributions to happiness, charities, and community service, she was honored with the Dada Sahab Phalke Award for the Benefactor of the Year. Ladies and gentlemen, please welcome Upasna Kamineni. Good evening. With so many learned people around and accomplished people around, I'm at a loss of words. But thank you for having me today. It really, really means a lot. Today, I represent the aspirational youth and the women entrepreneurs who I'm sure will form a significant part of New India. My family and I work in an environment where people battle life 24/7. We can definitely treat them through cutting-edge medical science, but my grandfather, Dr. Pratap C. Reddy, always believes that trust, faith, and love is more vital to humanity. He is teaching me to trust in myself, have faith in the people around me, and love unconditionally. It's a tough journey in today's world, but I know these teachings will last with me forever. I promise to surround myself with good people, because when good souls connect, they connect with us over lifetimes. I lost my grandmother Pushpa Umapati last year, but I truly believe she came back to me in my circle of love. I truly believe she came back to me as my daughter Klinkara today. We never lose those who are so dear to us, I have realized. My grandmother and her sisters believe in the principles of peace and heartfulness. And today I brought my 8-month-old daughter to be beside me and to take Daji's blessings. Klinkara and I are here today to thank each and every one of you for radiating so much love and positivity for us and the world to embrace. I wish the world had more oases like Kanha. It would then slowly grow to create oceans of heartfulness. This is the only way, in my mind, that we can nurture life on our planet. Daji, it's my humble request, please have a Kanha in every country and turn this oasis into an ocean very soon. I wish to share with you my experience of working in the Sri Salem forest for the last 4 years have encouraged me to have my daughter's Klinkara's naming ceremony conducted by the Chenchu tribe in their traditional way. Their love was pure, their respect for life was divine, and we couldn't wish for a more heightened form of blessing for our daughter. I truly believe the world is a beautiful place because I was taught to look at it through a lens of positivity. Klinkara's journey is not going to be easy, but we will do our best to teach her to embrace life with respect and optimism. Thank you.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉపాసన గారు. ఈనాటి విచ్చేసిన స్పీకర్స్, आज के जो भी speakers हैं, we are done with them and they have given us a wonderful rendition of the kind of message they would like to convey to all the audience here. Within a few minutes from now, we are expecting our Honorable Chief Guest, Honorable President of India, Madam Murmuji will be here. Till then, I request all of you all to be silent and in peace. Join me in this song which you all know very well. We have been listening to this song from childhood as such a meaningful song with the meaningful words. These words create a lot of peace within us and also convey peace to all the outside world too. The message of our global Spirituality Mahotsav, ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక మహోత్సవం అలాగే విశ్వ ఆధ్యాత్మిక మహోత్సవ్, these convey the inner peace to the world peace. So may I request all the brothers and sisters who know this song to please join me in this. इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. Can I have all of you? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, मन का जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन
हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। प्लीज एक साथ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद. Thank you so much. We are just waiting for the message that President will be arriving within a few minutes from now. Your wait is soon going to be over. वो दिखाई दे रही हैं राष्ट्रपति साहिबा, our honorable president श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो वहां पर एक ट्री प्लांटेशन हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में।
with the touch of the President's hands, you can be rest assured. The President is now going to visit the exhibitions, the various exhibitions on the spiritual history of India. I think she's boarded the golf cart already. I wonder whether we have a follow-through of the video of the exhibitions which he's visiting there. After that, there is a photo opportunity with all the religious world leaders who have gathered here outside. And after that, we expect the President to make her grand entry here. Yes, yes. Those are the exhibitions she's following. स्पीकर्स टोटली 5 है ना, 3 मेन बाहर के हैं, ये है प्रेसिडेंट जी है और अर्जुन जी है। और कौन 3 बाहर का जो है, हाँ, एक है आगे आगे से। तो इन तीनों को किस साइड है पहले आइडेंटिफाई करें? चिन्ह यहाँ है और बताओ। ये कौन है? नामरमुनि महाराज। नामरमुनि कॉर्नर में, तो वहाँ से नामरमुनि के पास जाने से पहले एक कौन अनाउंस करेगा नामरमुनि का? इनका है। नामरमुनि मेरा आपका है, आप अनाउंस करना तो मैडम आप जाकर नामरमुनि को यहाँ लेके आए, नहीं तो वो उधर ना चले। और कौन है? 2 तीसरा कौन है? चिन्ना जेर स्वामी जी। अच्छा, मैडम को क्रॉस मत करना, मैडम को क्रॉस आगे से नहीं, एवरी मोमेंट। तीसरा कौन है? सरस्वती जी। सरस्वती जी चिन्ह जी स्वामी को लाना है। अच्छा ज़्यादा मैडम का स्टेज ना वो एम्प्टी मत रखिए, आप कुछ ना कुछ आप में से कोई एक कॉन्वर्सेशन जनता के साथ बोलते रहिए कि आप कुछ ही पुलों में हमारे बीच आ गए। आप में से कोई महिला राष्ट्रपति है, ऐसा है वैसा है। गाना नहीं आप बस बात करते रहिए ऑडियंस में। अच्छा, आप लोग वक्ताओं को पीछे से जाके ले आना यहाँ तक। जब मैं तेलुगु आप बोलो, आप चिन्ह जाके जी स्वामी को पीछे से आप पीछे यहाँ से ले कि आना। सर इस पोडियम पर आना है। ओके, बाकी 2 मैं बोल दूँगी उनको ले।
हॉल सजा के भरा हुआ है, वो अभी प्रदर्शनी का आनंद ले रहे। प्रदर्शनी के बारे में बताओ कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, स्पिरिचुअल लेगेसी है, उसको दिखाया गया है, ये सब करो। So you all can see our Honorable President Srimati Draupadi Murmu is enjoying and watching the complete exhibition. The theme of the exhibition is on spirituality. A different kind of art has been presented there. It's indeed a pleasure that we can see the audience, the meditation hall is totally occupied with such wonderful audience from all over the world. Heartfulness Institute. This has been the brainchild of Daji. Has been conducting lot of different kind of heartfulness programs. And this is one of the epitome of the Global Spirituality Mahotsav being held in this prestigious premises of Kanha, Shanti, vanam. One of its kind, a spiritual celebration for social harmony and sustainable development. It is so nice to see each one of us connecting our inner peace to the world peace. And today, this 15th March, the second day, as we move on, today's session, which is going to be inaugurated by our Honorable Chief Guest, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. You can see all the leaders of the organizations assembled there for a rare photo opportunity with our Honorable President. This facility is just behind the stage. They've all taken their seats. Such a congregation of such highly esteemed people under one roof is a real rarity, which the Heartfulness Institute has been able to very successfully achieve. ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसमें बस ओके डन। हाँ ये हटाओ, इसको ऊपर करो।
पास वाला है ना? जो डैश वाले इनवाइट करो ना एक एक करके। अरे चले गए। अरे यार उनको करना है। कम कर लो ना यार। We are expecting the dignitaries to please come on the dais, please. मैं अनुरोध करती हूँ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, दाजी sir to please come on the dais. I also request Shri Acharya Balakrishna ji, Chairman Patanjali Ayurveda, to please come on to the dais. I also request Dr. Imam Umair Ahmad Ilyasi, Chief Imam of All India Imam Organization, also to please come and occupy the chair on the dais. May I request Swami Chidanand Saraswati ji, President Paramarth Niketan Ashram, to please come and occupy the dais. B.K. Mrutyunjay, Shri B.K. Mrutyunjay ji, Executive Secretary, Brahma Kumaris. I also request Abhijit Haltar, Director General of International Buddhist Confederation, to please come on to the dais. Dr. Tony Nader, Leader of Transcendental Meditator, to please come and occupy the chair on the dais. His Excellency Cardinal Anthony Pula, Archbishop of Hyderabad, to please come and occupy the chair on the dais. Guru Garu Shri Chinnajiyar Swami Garu, the founder of Statue of Equality, to please come on to the dais and occupy the chair, please. Swami Amrit Piyananda, Vice Chancellor, to please come and occupy the chair on the dais. Brahmacharini Shri Janardhan Bothe, General Secretary. Yogi Niranjan Das ji, Shri Dilshad Singh Anand, South Head, SGPC. Namramuni Maharaj Sahib ji, Brahmacharini Atmaprit Vidhi ji. My request all the dignitaries कि कृपया करके आप सब लोग मंच पे बैठ जाएं. May I request Daji ji to please felicitate Shri Arjun Ram Meghwal ji, Union Minister of State for Law and Justice and Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture. I request Shri Arjun Ram Meghwal ji to felicitate Acharya Balakrishna ji, Chairman Patanjali Ayurveda. I request Joint Secretary Madam Srimati Uma Nanduri ji to felicitate Dr. Imam Umair Ahmad Ilyasi ji, Chief Imam of All India Imam Organization. I request छोड़ दो. यहाँ से आएगा वो ऊपर में से माइक चेक 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ये दोनों ऑन पे हैं. श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और उमा जी फेलिसिटेट कर रहे हैं. बंद करो, पानी इधर लगा. ठीक है, माइक हमेशा ऑन पे रहेगा. To Sri Chinnajiyar Swami Garki. To Yogi Niranjan Das ji. श्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी से निवेदन है कि वे श्री दिलशाद सिंह आनंद इनका भी सत्कार करें. फेलिसिटेशन.
to Shri Dilshad Singh ji. भवानी राव जी को बुला देंगे दोबारा गायत्री जी भवानी राव Okay. Dr. Bhavani Rao ji to please come on the dais and occupy the chair, please. Bhavani Rao ji, Dr. Bhavani Rao ji. मैडम का फेलिसिटेशन नहीं ये हमारा चलेगा हमारा नहीं जो हमारा वाला मिनट इसको कंप्लीट कर सकते हमारा चलेगा हाँ ठीक है इसको कौन सर आप कर रहे हैं नहीं हम भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं नहीं वो नहीं सर फाइनल तो दोनों आना पड़ेगा मैम एक बार सुनिए प्लीज मैम फर्स्ट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल बी कंडक्टिंग नेशनल एंथम एंड देन द वेलकम स्पीच इज देयर आफ्टर द वेलकम फेलिसिटेशन ऑफ डिग्नेटरीज नहीं है वो आप ही का ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आया हो गया फेलिसिटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट वो तो है ना सर ముందు చేయమన్నారు लेटेस्ट मुझे को नहीं पता ये तो बोले थे खाली प्रेसिडेंट का तो होगा लास्ट मंथ को मैम एक मिनट थोड़ा पीछे ना ब्रेक स्कूल गवर्नमेंट उसके बाद नेशनल उसके बाद स्पीच है उसके बाद फेलिसिटेशन ओनली फॉर प्रेसिडेंट ओनली प्रेसिडेंट उसके बाद सिटिंग की कॉन्टेक्स्ट क्या होता है सिटिंग की मैम दिस इज ऑल आप प्लीज कंफ्यूज मत कीजिए और एग्जैक्टली वही सीक्वेंस नहीं है इसको फॉलो होगा यू कांट सेम सीक्वेंस यार यू कांट कम ऑन टेल इन द लास्ट मंथ क्या हो सकती है यहाँ पर पहुँच गए हमारे सबके चहीते दाजी जी से निवेदन है कि वे श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का सत्कार करें. द फेलिसिटेशन टू जोरदार तालियों से प्लीज लेट अस द फेलिसिटेशन ऑफ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी. थैंक यू दादी जी, थैंक यू. सब्र का फल हरदम मीठा रहता है. तो प्रेसिडेंट साहिबा आ रही हैं. उन्होंने वहाँ प्लांटेशन किया, आपके एग्जीबिशन देखा स्पिरिचुअल, और फोटोग्राफी भी हो गई है. यहाँ पर जो डिग्निटरीज हैं उनको भी हम लोगों ने फेलिसिटेट किया. अब इंतज़ार है प्रेसिडेंट साहिबा का, जल्दी आ रही हैं वो. नीचे गिर
ये वाला पोडियम इस्तेमाल करेंगे, सबको पता है, सबको बोल ये वाला पोडियम है। और जितने डिग्निटरीज और स्पीकर्स हैं, सबसे गुजारिश है कि जिस पोडियम से मैं बोल रहा हूं अभी, वो वाला पोडियम ही इस्तेमाल करें। The other podium on the right is meant exclusively for the President of India. लेके आ रहे हैं तो बस अनाउंस करना है कि शी इज कमिंग। Ladies and gentlemen, please welcome our President, Srimati Draupadi Murmu. Our Honorable President, she is just coming out. A big round of applause, ladies and gentlemen. बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रपति साहिब आपका। This is indeed a great honor for us, ma'am. और सबसे दरख्वास्त है कि हम लोग अभी नेशनल एंथम प्ले करेंगे and the police band is requested now to play the national anthem, please. Request all of you all to please rise for the national anthem. Jai Hind. May I request all of you all to please be seated. May I request Honorable Union Minister of State for Law and Justice and Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture, Shri Arjun Ram Meghwalji, to render the welcome speech. वर्ल्ड स्पिरिचुअल महोत्सव के अवसर पर उपस्थित इस मंच पर और हम सबको सात्विक ऊर्जा से सरोबार हम सब में प्रेरणा भरने वाले ऐसे हमारे महामहिम भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दाजी, जिनको कमलेश पटेल जी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग दाजी के नाम से जानते हैं। दाजी के इस हार्टफुलनेस परिसर में
जितने भी संत मंच पर उपस्थित हुए हैं, चाहे वो परमार्थ निकेतन के चिदानंद सरस्वती जी हों, चाहे बालकृष्ण आचार्य जी हों, चाहे और संत हों, उन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सभी का भी मैं स्वागत और वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं संस्कृति मंत्रालय की ओर से। ये कार्यक्रम वर्ल्ड स्पिरिचुअल महोत्सव भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और दादी जिनके धर्मगुरु हैं, ऐसे हमारे हार्टफुलनेस के सहयोग से ये आयोजित हो रहा है। ये ऐसा अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है राष्ट्रपति जी कि हमने इसको इस रूप में अभी आपको दिखाया कि स्वामी विवेकानंद जब 1893 में शिकागो में भारत के आध्यात्मिक चेतना का गुणगान करते हैं, उस समय से लेकर अब तक हमने स्पिरिचुअल सेक्टर में क्या क्या तरक्की की है, ये एक पार्ट था। लेकिन स्वामी विवेकानंद से पहले भी भक्ति काल भी था, जैनिज्म, बौद्धिज्म, बुद्धिज्म और बहुत से ऋषि हुए हमारे समाज में, हमारे देश में, जिन्होंने हमारा ज्ञानवर्धन किया। लेकिन और आगे चलेंगे तो भगवत गीता का ज्ञान भी हमें मिलेगा, वेदों का ज्ञान भी हमें मिलेगा। तो वेद से योग तक की यात्रा, योग में इसलिए कह रहा हूं कि योगा एक ऐसा सेक्टर बना है जिसमें इंडिया हैज बिकम ए ग्लोबल लीडर, और इसमें जितने भी संत यहां बैठे हैं उन सब का योगदान है, उन सब का योगदान है। जो बैठे हैं, जो देश में काम कर रहे हैं, जो विदेश में काम कर रहे हैं, उन सब का योगदान है। मैं राष्ट्रपति जी थोड़ा सा एक स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है जो उन्होंने शिकागो सम्मेलन के बाद मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आपका देश आजाद कब होगा, आपका देश इंडिपेंडेंट कब होगा। जब ये पूछा गया, इंडिपेंडेंस कब प्राप्त करेगा, जब ये पूछा गया तो उस समय कठिन सवाल था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1895। लेकिन स्वामी जी मेडिटेशन में गए, ये हमारी स्पिरिचुअल पावर है। और मेडिटेशन में जाने के बाद जब स्वामी जी को 3 चीजें दिखी तो उन्होंने उस क्वेश्चन पूछने वाली महिला को कहा, नाउ यू लिसन मी। तो उन्होंने कहा, बोलिए आपका देश आजाद कब होगा। तो स्वामी विवेकानंद ने 1895 में कहा कि ऐसी परिस्थितियां बनेगी संसार में कि भारत 50 साल के आसपास आजाद हो जाएगा, अंग्रेज उसको छोड़ के चले जाएंगे। और ये भविष्यवाणी सही हुई। सही हुई या नहीं हुई? तो जोरदार स्वामी विवेकानंद जी के लिए ताली बजा दो। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने की कि मैं देख रहा हूं, तो वो जो क्वेश्चन पूछने वाली महिला थी उसने कहा, नहीं मैंने एक ही पूछा है, कि नहीं मुझे 3 दिखे। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने की स्वामी विवेकानंद जी ने कि मुझे दिख रहा है कि कार्ल मार्क्स के जन्म के ठीक 100 साल बाद रशिया में एक क्रांति होगी, और उसके ठीक 100 साल बाद उस क्रांति से उपजे हुए विचार में भी कमी आएगी। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा ही नहीं, और रशिया में क्रांति नहीं हो सकती, रशिया एग्रीकल्चर कंट्री है। क्रांति अगर कभी होगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की आपने बात की हो, तो जर्मनी में हो सकती है। उन्होंने कहा मुझे रशिया दिखा है। तो कार्ल मार्क्स कब जन्मा? 1816। रशिया में क्रांति कब हुई? 1917। ठीक 100 साल बाद स्वामी विवेकानंद ने उससे पहले कहा था 1895 में। और ठीक 100 साल बाद जो कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी वो धीरे धीरे कम भी हो गई। इसका मतलब 2 भविष्यवाणी
स्वामी विवेकानंद की सही हो गई ना? जोरदार ताली बजाइए स्वामी विवेकानंद के थॉट पे। तीसरी भविष्यवाणी उन्होंने की जो बहुत शानदार है। उन्होंने कहा कि इन 21st सेंचुरी इंडिया विल बी इकोनॉमिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रश्न पूछने वाली महिला ने कहा, स्वामी जी आप गलती कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं 19वीं शताब्दी में, आप 20वीं शताब्दी को खा गए और 21वीं शताब्दी में चले गए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मुझे जो दिखा वो मैंने बताया। आज हम यहां खड़े होकर के कह सकते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी मिशिगन यूनिवर्सिटी में 3 भविष्यवाणी करते हैं, 2 सही हो गई तो तीसरी भी सही होने वाली है। ये मैं आपके इस वर्ल्ड स्पिरिचुअल महोत्सव के दौरान कहना चाहता हूं। और अब वो समय भी आ गया है, ये अमृतकाल है। हमारे गणतंत्र को 75 साल पूरे हुए और 75 साल पहले 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, हमने गणतंत्र में प्रवेश किया, रिपब्लिक बने। और 75वें साल के इस अवसर पर अमृतकाल की बेला में यहां कान्हा शांति वनम हैदराबाद में ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल महोत्सव हो रहा है। ये कह रहा है हमें, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में ये कह रहा है, स्वामी विवेकानंद जी की गूंज जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में गूंजी थी उसके आधार पर कह रहा है यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और इसी समय पे आप सब मिल रहे हैं। आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। Thank you, sir. Now is the time to felicitate our Honorable President, Srimati Draupadi Murmu. For that, I would like to call Shri Arjun Megwal and Daji to felicitate Hamari Rashtrapati Sahiba. Can we have the gifts on stage, please? We have another gift coming. That's a lovely painting. And Daji. Thank you very much. Please take your seats. The current spiritual guide of the Heartfulness Movement, the president of Sri Ramchandra Mission and author, who practices and develops the authenticity of heartfulness, compassion. Please put your hands together and welcome Padma Bhushan Sri Kamlesh Ji Patel Daji to please address the gathering and set the context further. What a moment. We are really, really greatly honored by Her Highness, Most Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. My heartful pranams. It's a great moment to have with us so many dignitaries, spiritual guides from all across the globe. My heartful salutations to all of them. And my very dear sisters and brothers, thank you. Thank you for joining us. The dream of Swami Vivekananda ji, perceived by so many of us
and now facilitated by Government of India and especially Cultural Ministry, who has supported this particular movement of bringing so many paths, so many followers together. Now that we have come together, it is just the beginning. What do we do next? What is the purpose of this meeting? Our goal is very clear, to bring about harmony within each community through individual peace, the global peace. There is no magical wand that can change the level of peace and global harmony in one stroke. Lord Krishna could not attain it. None of us can attain it alone. We all have to work together, individually, one heart at a time. When so many samsthas, organizations have come together, as I said, it is just the beginning. Next thing, all of us take up some projects with us, co-share those projects, implement those projects, and successfully complete those projects all across the globe, not just in India. When volunteers from Jainism, volunteers from Buddhism, our Sikhs brothers and sisters, our Muslim brothers and sisters, Christian, Jews, Hindus, whatnot, when we all work together, we will be able to understand each other's minds and hearts, emotions. When we work together, we'll be able to dissolve the differences, and that will be the sign of progress. When we work together, it's the next step to just a mere beginning. And further step would be to grow together. We maintain these relations of working together for a longer and longer and longer period, and see how the small steps of coming together is now evolving. Youth especially. When many youth members from various colleges can come together, people of different faiths come together and do just simple things like plantations, simple things like going to villages and help children understand the importance of education. Teach the farmers how to double up their crop productivity, how to skyrocket or increase the intuitive capabilities of little children. So many things can be achieved when we work together. So this meeting is not just about exchanging philosophical ideas, but mainly to come together as one and spread the message of love. Otherwise, these sorts of meetings will go on and on. But actually, imagine, when did we ever had such a meeting? I don't recollect in recent era ever happening like this, and our grateful hearts go out to the Ministry of Culture for coming up with this idea of bringing so many samsas together so that we can promote brotherhood, love, compassion towards each other. What else can I say? We are all grateful, and especially this moment has been so blessed by her Honorable President of India, Srimati Draupadi Devi. Thank you. I cannot thank you enough. And on behalf of all of us, one good applause for our Madam. Thank you, thank you, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद दाजी. We have now a small audiovisual presentation, a small film on your global spiritual Mahotsav. Can we play the AV, please?
मेरा मानना है कि आध्यात्म ही वो प्रकाश पुंज है जो पूरी मानवता को सही राह दिखा सकते हैं। हमारे देश को विश्व शांति के लिए विज्ञान और आध्यात्म दोनों का उपयोग करना होगा। हमारा लक्ष्य है कि भारत एक नॉलेज सुपर पावर बने। What is it about this place that calls to the soul? A place of ancient rivers and sacred mountains that touch the sky. A land where every corner hums with the echoes of prayers. This is Bharat, Ved Bhumi, the host of the Global Spirituality Mahotsav, organized by the Ministry of Culture and the Heartfulness Institute. Bharat is a rich tapestry woven down the ages by mystics, saints and sages. One that celebrates all faiths and spiritual traditions. In 2024, the world is coming to Kanha Shanti Vanam. People from different countries, faiths and beliefs coming together to embark on a journey from inner peace to world peace. భారతదేశం అంటే కల్చర్, సంస్కృతి, స్పిరిచువాలిటీ, ఆధ్యాత్మికత, ఇది మన భారతదేశం యొక్క సాఫ్ట్ పవర్. మన కల్చరు, మన స్పిరిచువల్ గైడెన్స్ ద్వారా యావత్ ప్రపంచాన్ని మనం ఈరోజు ప్రభావితం చేస్తా ఉన్నాం. और अब बहुत अच्छा समय है, जैसे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा, यही समय, सही समय, भारत का अनमोल समय। इस समय हम एक वर्ल्ड को दिशा दिखा सकते हैं स्पिरिचुअल, और हमारे में वो इनबिल्ट ताकत हो। टुडे मुझे लगता है कि वर्ल्ड नीड्स द म्यूजिक ऑफ लव, म्यूजिक ऑफ पीस, म्यूजिक ऑफ हार्मनी, and that can be found in the land of the yoga, the birthplace of yoga. Om Shanti. It's time for peace. It's time for love. It's time for forgiveness. Join us for the monumental Global Spirituality Mahotsav event being held at the Kanha Shanti Vanam facility. During these 3 to 4 days of event, we'll be exchanging ideas how to bring about this individual peace, and how through this individual peace we can create harmony within the society. The world has always turned to India for spiritual guidance, and this initiative is much needed platform. Amma prays to the Paramatman for the success of the Global Spirituality Mahotsav. May the event and the various activities help elevate society's spiritual growth. May all of you become messengers of love and peace in this world. Humanity has to now develop a new vision for the world. When we think about peace and security, we will have no choice but to include the whole world. हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबकी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है. Raising individual consciousness is the most imperative aspect in the world today. My felicitations to the Ministry of Culture on organizing the Global Spirituality Mahotsav. My congratulations to Daji for hosting this event. We should work together for the common goal of worshipping the society we live in and respecting the systems of the society. भारत के आध्यात्मिक जो बल है, ये
दुनिया के हर कोने में लोगों के लिए आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी है कि आज विश्व शांति के लिए आध्यात्मिक एक पहलू को भारत सरकार की सांस्कृतिक मिनिस्ट्री ने हाथ में लिया है। रामकृष्ण जी, आप सभी सम्मिलित हो गए भक्ति संप्रदाय की, भक्ति परंपरा की इस महाराष्ट्रीय ज्ञानेश्वरी तथा तुकारामीय संप्रदाय परंपरा। रामकृष्ण। Vivekananda Swami Annaru, manifest the divinity within you and everything will be harmoniously arranged around it. The Mahotsav, which we are looking forward to, is precisely an event where we will see a convergence of brilliant people, brilliant minds from all across, especially from the world of spirituality. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने भी कहा था कि विश्व स्नेह का ध्यान धरे, सबका सब सम्मान करे। उन्होंने ये भी कहा है कि मंथन किया हर धर्म का, हर पंथ का, हर देश का, निकला यही मेरी समझ में सार शुभ संदेश का। अब विश्व मानव मित्र बनकर पास में सबके आएंगे, शांति तभी हो पाएंगे, नहीं तो खत्म हो जाएगी। It is my pleasure to welcome you all to the first ever Global Spirituality Mahotsav being organized by the Ministry of Culture at Kanha, Shanti, Vanam. I thank each and everyone who has come forward to help organize this unique Mahotsav, whose theme is Inner Peace to World Peace and make it a grand success. Special thanks to Heartfulness for hosting this event at the Kanha, Shanti, Vanam. Thank you. Namaskar. Bharat welcomes you to the Global Spirituality Mahotsav. Rashtra Sant Param Gurudev Namramuni Maharaj Sahib is a Jain saint, a revered spiritual leader, a humanitarian who's bringing about positive changes in countless lives across the world. Param Gurudev is the founder of Parasdham, an Indian socio-religious organization with a global footprint. Prominent initiatives of the organization include Arham Yuva Seva Group, a youth wing with 55 plus centers globally, and Look and Learn and Jain Gyan Dham on moral education initiatives that imparts Jain values and promotes interfaith harmony in children with over 100 centers across the world. I would now like to invite him on the podium. Please welcome Rashtra Sant Param Gurudev Namramuni Maharaj Sahib. हाल आज इस ग्लोबल महोत्सव के अंदर उपस्थित हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे मेघवाल जी और दाजी, उपस्थित सारे संत पुष्प जिनकी फ्रेगनेंस आज पूरे इस वातावरण में एक अलग ही एहसास करा रही है। मैं आज दाजी के इस प्रयत्न का तहे दिल से सराहना कर रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह से सबको एकत्र करते हुए हार्टफुलनेस के
इस प्रोग्राम में सबको जोड़ा है। मैं इनर पीस टू आउटर, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि भगवान महावीर ने कहा, जहां परिग्रह होता है ना, वहां प्रॉब्लम होता है। जहां परिग्रह होता है वहां प्रॉब्लम होता है, और जहां प्रॉब्लम होता है वहां पीस नहीं होती। परिग्रह बाहर में समृद्धि का, उससे भी ज्यादा परिग्रह होता है हमारे अंदर में शब्दों का। और उन शब्दों की जो मेमोरी हमारे अंदर में होती है ना, वही ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीस से प्रॉब्लम की ओर ले जाती है। और इसलिए आज के इस महोत्सव में चाहे राष्ट्रपति महोदया हो, चाहे उपस्थित सब हो, सबने एक अनुभव किया है कि जब भी कोई ऐसा शब्द, जब भी कोई ऐसी कोई बात अंदर में जाती है ना, तो फिर वो धीरे 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 अंदर में कहीं ना कहीं पीस से पॉइजन की ओर, पीस से पॉल्यूशन की ओर ले जाती है। और इसलिए मैं आज ज्यादा कुछ प्रवचन नहीं, सिर्फ एक सूत्र देना चाहता हूं। क्या सूत्र मालूम है? हम जो भी सुने ना, हम जो भी सुने ना, ठीक है, जो ग्रहण करने योग्य है वो स्वीकार किया। बाकी जितने भी पॉइजनस वर्ड है जो मेमोरी बनाते हैं, हमें एक सूत्र याद रखना है, इस कान से उस कान और इस चेहरे पर मुस्कान। क्या याद रखना है? इस कान से उस कान और अपने फेस पर, अपने चेहरे पर मुस्कान। एक सूत्र याद हो गया ना, तो अपने आप में ही अंदर में जो मेमोरी पॉइजनस है, जो हमें प्रॉब्लम करती, जो हमारे अंदर में शांति को अशांति की ओर ले जाती, बस एक लाइन फिर एक बार मैं आपके मुंह से बुलवाना चाहता हूं। क्या बोलो? इस कान से उस कान और अपने चेहरे पर क्या होना चाहिए? मुस्कान। आज ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव के अंदर हमें आमंत्रित किया गया, हमारे यूसुफ कोठारी वगैरह जिन्होंने भी प्रयत्न किया, उन सबकी भी मैं सराहना करूंगा। और फिर एक बार इस स्पिरिचुअलिटी महोत्सव के अंदर उपस्थित हुए सबको बस अपने चेहरे पर मुस्कान हो तो सामने पूरे वर्ल्ड में मुस्कान आ जाएगी। और यदि हमारे चेहरे पर लोड होगा तो फिर लॉर्ड कहां से आएंगे? हेलो हेलो, क्या याद रखना? इस फेस पर यदि भार है तो भगवान कहां से आएंगे? और यदि इस चेहरे पर कोई किसी प्रकार का लोड नहीं है तो समझ लेना कि यश लॉर्ड हमारे सामने ही उपस्थित है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं हमेशा के लिए ऐसा मानता हूं कि कम समय में ज्यादा कहना चाहिए। तो फिर एक बार इस कान से उस कान और चेहरे पर मुस्कान। मैं मेरे वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूं। मुझे दी गई 5 मिनट में से मैं 1 मिनट कम लेकर मेरे प्रवचन को समाप्त कर रहा हूं। शुभ हो, मंगल हो। A guru, a Vedic scholar, and a spiritual teacher. The Statue of Equality, which is dedicated to Ramanujacharya in Hyderabad, is the designer and the planner behind that. The guiding soul for the Telangana state government renovation of the Yadadri temple.
and he is one of the few Giers who accepts the disciples irrespective of their caste. Please put your hands together and welcome Sri Tidandi Chinnajiyar Swami Garu. As said in Telugu, Gaurang Jiyar Swami Garki మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. जय श्रीमन नारायण। माननीय महोदय, भारत का राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी और इस महान प्रकल्प का आयोजक श्रीमान श्रद्धेय दाजी महोदय और इसका मूल कारण मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पूज्य मंत्री महोदय और यहाँ उपस्थित सारे धर्मगुरु, धर्म प्रेमी और सब भगवत बंधुओं, today is a great day where Daji became so selfish. He became really selfish in expanding the horizon of the self from one to the whole world. When we become selfish, we love every part of our body. And when we become selfish to our family, we love every person of the family. And when we become selfish for the sake of country, we love every part of the country and people. And today, our Ministry of Culture of Bharat, along with Daji, they wanted to expand the horizon of their selfishness around the world. They wanted all people, all religions, all paths of spirituality to come together and become bees, honey bees. There is great honey at every part of the world in the flowers of the hearts of the people. We have to gather them. Today, for the first time in the Bharat ka itihas, our Ministry of Culture is conducting this wonderful global spirituality Mahotsav, not only just to gather all the honey drops from the religious and spiritual paths of the world, but also to make a humble beginning to build a heartful and lovely world with peace to enjoy from within, and thus see the world a heaven on this earth. Our hearty Mangalasasanams to the Ministry of Culture of Bharat and Daji for organizing this here in the Shanti Vanam, Khana Shanti Vanam, and our Mangalasasanams to our Honorable Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu ji
for long living, for promoting harmony, and for encouraging this kind of great events. God bless with good strength and health for gracing this kind of occasions and encouraging the Bharat Atma in encompassing the whole world with peace. Jai Sriman Narayan. Is the sound all right now? Are we all audible? Or is there some echo coming? We've tried to tweak the sound. His Highness Pujya Swami Chidanand Saraswati Ji is President and Spiritual Head of Parmarth Niketan Ashram, one of the largest interfaith spiritual institutions in India. Under Pujya Swamiji, it has increased several-fold the humanitarian activities undertaken by the institution. Pujya Swamiji is also on the Board of Trustees of the India Development Foundation of Overseas Indians, a not-for-profit trust to facilitate overseas Indian philanthropy in society and development projects in India. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओ शांति 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 भारत माता की वंदे वंदे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज today is a very historical day. We are sitting in Kanha Shanti Vanam, a beautiful place, very divine place, a divine ashram. इस दिव्य धरती पर मैं हमारे देश की भगवती स्वरूपा, शांति स्वरूपा, हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी, मुझे याद है कि जब मैं पिछली बार राष्ट्रपति भवन में उनसे मिला, मुझे लगा कि मैं केवल राष्ट्रपति से नहीं बल्कि एक शांति से मिलन कर रहा हूँ। क्या शांति उनके चेहरे पर, ये है ध्यान की शांति। दिस इज आवर कल्चर। आदरणीय महामहिम, हम आपको पाकर ये पूरा भारत धन्य है कि आप इस भारत को एक दिशा दे रही हैं। आदरणीय एक ए मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजन एंड विजडम, आवर दाजी, who has touched millions and millions and millions on this earth, just
with his touch. Because Guru is not a teaching, Guru is a touch, and Guru is a transformation. And he never calls himself a Guru. He calls himself a guide, your friend. And Daji, तमें तो एक तीर्थ ऊभू करियो छे यहाँ, एक तीर्थ आपने यहाँ पर खड़ा किया है. मैं तो बचपन से छोटा सा था, आया इस लाइन में, मैंने देखा कि कई बार कई तीर्थ भी एक संत पैदा नहीं कर पाते, लेकिन एक संत कहाँ बैठ जाता है तो वहाँ तीर्थ बन जाता है. हजार बुझे हुए दीप, हजार बुझे हुए दीप एक भी दीप को नहीं जला सकते, लेकिन जब एक कोई प्रकाशित दीप, एक जला हुआ दिया कहीं बैठ जाता है तो करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में दिए जल जाते हैं. और वही काम हार्टफुलनेस के माध्यम से पूज्य दाजी आपने किया है. एंड ऑल द रिस्पेक्टेड ब्यूटीफुल डिवाइन लीडर्स फ्रॉम ऑल थॉट्स ऑफ स्कूल्स और आवर very dedicated and devoted and committed culture minister. Sometimes culture ministries are there, but it's not necessary they are cultured ministries. And you have made sure that through this culture ministry, thing should show the whole tapestry of India. और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ. I remember our honorable cabinet minister, Dr. Krishna Reddy ji also. All the revered saints, my sisters and brothers, we can see this beautiful culture today. This is culture of India. This is spirit of India. This is spirit of India where all saints are sitting together, all people from all walks of life, from all regions, religions, color, creed and caste. No divisions, no barriers, no boundaries. Just one thought that we are one. Right now, our Daji said it. The working together. Let me tell you, our Honorable Prime Minister of India, we are very fortunate that we have him amongst us as a Prime Minister. He is not only a mere Prime Minister, he is a yogi Prime Minister of India. One thought, wherever he goes, when we are having आरती on the banks of Ganga, Daji, आदरणीय महामहिम, आप वहाँ पधारे हैं, वहाँ पर the first event took place, Ganga ji ki aarti, and I could see how people sitting from all across the world, from 20 nations, they were touched and transformed. They could have taken to the Taj Mahal also first day, but they were brought to Ganga. ये जो सोच है भारत के प्रधानमंत्री जी की कि सब एक हैं, सब मिलकर करें, और एक मंत्र कि वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र जो ऋषियों ने दिया, लेकिन यदि उसे पूरे विश्व में चरितार्थ किया हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये सोच, ये भारत का सौभाग्य है. उनकी सोच भी अच्छी है. और सच मानिए, जिस खेल में कोच बढ़िया हो और कोचिंग बढ़िया हो, पक्का मानिए वो स्टूडेंट भी बढ़िया होता है, वो खिलाड़ी भी पास होकर आते हैं. हमारे देश के पास एक सोच है और एक कोच बहुत बढ़िया है जो हमारे देश को मेरा भारत मेरा परिवार इस भाव से साथ लेकर चल रहा है, जहां कोई बैरियर्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है. और दाजी जो आपने अभी कहा, वर्किंग टुगेदर इज द की, मुझे तो लगता है if any mantra will work in the 21st centuries and centuries to come, if any music is going to touch people, make dance people, the mantra of oneness, the mantra of togetherness, allness, inclusiveness, this is the spirit of India. Last, Mahatma Gandhi said so beautifully. He said,
What is the use of that fast speed which has no direction? Speed is there. People are online, but they are not aligned. They are not aligned. That's why Daji was thinking, Gujarat and Hyderabad, how you selected this place? Because this place is place of IT hub. It's wonderful to have a speed. Speed can take you to the world, but sometime it happens, you forget yourself. Speed can fill your shelf with the money, but if direction is not there, self will be empty. Fill your shelf, but self should not stay empty. This is the spirituality of India tells us, where internet or internet should go together. Inner peace to the world peace. If we are not in peace, how we can bring peace to the world? If we are in peace, we share peace, we manifest peace, and we exude peace. If we are in pieces, only we share pieces, nothing but pieces. That's why choice is our peace or pieces. This Mahotsav is there to give you the message. No more pieces, just peace. Because youth is not the way the whole world has seen. Youth is not the way. Yoga is the way. Meditation is the way. Peace is the way. War is not the way. And heartfulness is the way. If heart is full, you share. If heart is empty, what do? Create mess in the world. So let us practice this heartfulness. Practice this India's spiritual, beautiful culture which makes us one, keeps us one. And this is the only way that there will be not only the global spirituality Mahotsav, our life also will become festival. Thank you. थैंक यू स्वामी जी। अब मैं निवेदन करती हूँ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे हम सब ऑडियंस को करें। So the time has come for the President, Honorable President, श्रीमती। इस समारोह में मंच पे विराजमान केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मंच पर विराजमान संत समाज, सामने बैठे हुए सभी साधु संतगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, आप सभी को मेरा सस्नेह नमस्कार। इस विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में भाग लेकर मुझे आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन करने के लिए मैं केंद्र सरकार के मंत्रालय तथा श्री रामचंद्र मिशन की टीम के सभी सदस्यों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आंतरिक शांति से विश्व शांति तक का संदेश आज के वैश्विक वातावरण में पूरे मानवता के कल्याण हेतु एक अनिवार्य संदेश है। विभिन्न पंथों और संप्रदायों में आस्था रखने वाले लोगों के बीच मेल जोल और आपसी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित ये महोत्सव मानवता के कल्याण की दिशा में अत्यंत सराहनीय प्रयास है। यहाँ इतने पवित्र उद्देश्य के साथ लोग इतने बड़ी संख्या में एक साथ एकत्र हुए हैं, ये देखकर मुझे अपने देशवासियों की आध्यात्मिकता चेतना पर गर्व होता है। भारत भूमि लोकतंत्र की जननी है। भारत भूमि अध्यात्म बोध की भी जननी है। अलग अलग संतों के अनुयायी एक दूसरे का सम्मान करें और परस्पर सहयोग करें, ये विश्व शांति के लिए सहायक ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। एक ही सत्य सर्वत्र प्राप्त है, ये चेतना ही आध्यात्मिक चेतना है। इस चेतना में किसी भी प्रकार के भेदभाव और विभाजन के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक चेतना का ये महोत्सव पूरी मानवता की एकता का महोत्सव है।
वैश्विक एकता ही यही आध्यात्मिक भावना समस्त विश्व समुदाय को एक ही परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्यों के मूल निहित है। हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति के बारे में ठीक ही कहा है। सा प्रथमा संस्कृति विश्वबारा, अर्थात हमारी संस्कृति अग्रणी संस्कृति है और विश्व की रक्षा तथा कल्याण करने की उद्देश्य प्रेरित है। आध्यात्म पर आधारित हमारी संस्कृति ने विश्व बंधुत्व की भावना के केंद्र में रखा है। इसीलिए किसी एक ही दर्शन को सही और अन्य सही को गलत सिद्ध करने से हमने परहेज किया है। हमारी परंपरा में सत्य तक पहुंचने के सभी मार्ग का आदर किया जाता है। सर्वत्र समदर्शन हो, अर्थात सबको समभाव को देखने वाला व्यक्ति ही योगी माना जाता है। समत्व का ये भाव हमारी आध्यात्मिक परंपरा का आधार है। नैतिकता और आध्यात्म पर आधारित जीवन व्यक्ति और समाज दोनों स्तरों पर हितकारी है। हमारी परंपरा में आध्यात्मिकता और नैतिकता को दैनिक जीवन का आधार माना गया है। गृहस्थ और व्यापारी अपना कामकाज नैतिकता के आदर्शों और आध्यात्मिक लक्ष्यों के अनुरूप करें, यही हमारा पूर्वजों की विरासत रही है। इस विरासत के आधार पर आधुनिक विकास की दिशा में बढ़ने वाला व्यक्ति सफल भी हो रहेगा और खुशी भी। बाहर की सफलता और अंदर की शांति दोनों को एक साथ प्राप्त करना सर्वथा संभव है। यही हमारी नीति शास्त्रों और आध्यात्मिक परंपरा में बार बार समझाया गया है। देवियों और स्वजनों, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जगत गुरु शंकराचार्य, संत कबीर, संत रविदास और गुरु नानक से लेकर स्वामी विवेकानंद तक भारत की आध्यात्मिक विभूतियों ने विश्व समुदाय को आध्यात्मिकता की संजीवनी प्रदान की है। राजनीति में भी आध्यात्मिक मूल्यों को आधार बनाने के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साबरमती के संत कहलाए थे। श्री रामचंद्र मिशन द्वारा राजयोग की प्राचीन पद्धति को आधुनिक युग में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पद्धति भी सदैव कल्याणकारी रही है और बनी रहेगी। व्यक्ति और समाज के कल्याण हेतु इस पद्धति को प्रसारित करने के लिए मैं श्री रामचंद्र मिशन की सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस मिशन के संस्थापक पूज्य श्री रामचंद्र जी महाराज की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। आप सबके साथ मैं इस महान आध्यात्मिक विभूति को सादर नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस संस्थान द्वारा लगभग 8 दशकों से व्यक्तिगत और सामूहिक उत्थान के लिए निरंतर योगदान दिया गया है। इसके लिए मैं श्री रामचंद्र मिशन से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को साधुवाद देती हूँ। श्री रामचंद्र मिशन के कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए दाजी कमलेश पटेल जी विशेष सराहना की पात्र है। उन्होंने हार्टफुलनेस मूवमेंट को आज 160 से अधिक देशों में प्रसारित किया है। दाजी को वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। ये मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात है। हार्टफुलनेस मूवमेंट के माध्यम से दाजी भारतीय परंपरा के चिरस्थायी सिद्धांतों को आधुनिक शब्दावली में आज के बदलते हुए समाज में लोकप्रिय बने रहे हैं। इस मूवमेंट के सिद्धांत सकारात्मक है तथा आशा का संचार करते हैं। आपके मुख्य सिद्धांतों के बारे में जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मनुष्य अपने नियति अथवा भाग्यों का निर्माण स्वयं कर सकता है और ये निर्माण कार्य वर्तमान में ही संभव है।
अतीत में नहीं वर्तमान में किया गया सत्कर्म ही आज से भविष्य का स्वरूप निर्धारित करता है। हमारे सोच ही हमारी नियति का निर्माण करती है। हमारी राग देश हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने नियति का निर्माण करने के लिए हमें अपने मनोमस्तिष्क पर नियंत्रण रखना होगा और इसके लिए ध्यान साधना का सहारा लेना होगा। मैंने स्वयं अपने जीवन में ध्यान साधना के अच्छे प्रभाव का अनुभव किया है। ध्यान के द्वारा ही हम अपने अंतःकरण में प्रवेश कर पाते हैं, स्वयं को गहराई से समझ पाते हैं तथा मन की गतिशीलता का अंतर्दृष्टि की सहायता से देख भी पाते हैं। आँखों की सहायता से हम स्थूल जगत को देख सकते हैं। ध्यान साधना से हम सूक्ष्मता का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान साधना के द्वारा स्वयं को देखना और बदलना संभव हो पाता है। हमें चाहिए कि हम पहले स्वयं अपने आप में बदलना चाहिए और उसके बाद ही दूसरे लोगों में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि सभी लोग अपने सुधार को सुनिश्चित करें और परोहित में कार्य करें तो एक दिन ऐसा आएगा जो हम सब मिलकर पूरी मानवता को सही दिशा में ले जा सकेंगे। श्री रामचंद्र मिशन की सहज मार्ग साधना तथा हार्टफुलनेस के सिद्धांतों में आध्यात्म और परंपरा के महान आदर्शों के अनुरूप व्यक्ति, समाज और विश्व के कल्याण के प्रभावी माध्यम उपलब्ध है। उनको जीवन में ढालने से मंगलकारी परिवर्तन होगा सुनिश्चित है। ये पद्धति जटिलता के स्थान पर सरलता, स्वार्थ के स्थान पर परोपकार, अहंकार के स्थान पर विनम्रता, भय के स्थान पर साहस तथा मानव को दूर करके तनाव को दूर करके शांति की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। देवियों और स्वजनों, हमारी भारत भूमि भोगभूमि नहीं है, इसे कर्म भूमि और पूर्ण भूमि माना गया है। परोपकार करने को सर्वाधिक पूर्ण कार्य माना गया है। नर सेवा को ही नारायण सेवा कहा जाता है। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः की सर्वमंगल कामना हमारी प्रार्थनाओं का अभिन्न अंग है। अहिंसा और करुणा हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस आध्यात्मिक महोत्सव के सभी प्रतिभागी ऐसे मूल्यों और आदर्शों के प्रति और अधिक निष्ठा के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। पूरी मानवता को प्रबुद्ध बनाने के आप सबके इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए कम है। आध्यात्मिक विकास और मानवीय सौहार्द के आदर्शों को आप सब शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैं इस अति विशिष्ट आयोजन की सफलता की मंगल कामना करती हूँ और भारत भूमि सहित समग्र विश्व के कल्याण हेतु प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, our Honorable President. Now I would request the President and all the dignitaries to kindly take your seat there, step out of the dais onto the floor, and we have a cultural program to witness. Please enjoy the program. We have all the seats laid out right here in front. सभी डिग्निटरीज से निवेदन है कि कृपया स्टेज के सामने मंच सजा है वही मंच पे पधारें। कुछ ही क्षणों में सुर की साधना, a musical presentation. We'll have a wonderful music and dance session.
కాసేపట్లో ఇక్కడ ఒక సాంస్కృతిక కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. సో అందరికీ మనవి, దయచేసి ఈ కాసేపట్లో ప్రోగ్రాం ముగించే ముందు ఒక చక్కటి సురఖీ సాధా అనే ఈ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ ప్రెజెంటేషన్ మీరు చూడబోతున్నారు. Honorable President of India, dignitaries, ladies and gentlemen, we are happy to present the anthem of the Global Spirituality Mahotsav. The anthem begins with the popular yoga mantra, Loka Samasta Sukhina Bhavantu, which is an universal wish for happiness and well-being of all living beings. May all living beings everywhere be happy and free, and may the thoughts, words, and actions of my own life contribute towards that happiness and freedom for all. Interspersed is the theme of the conference, Antarik Shanti Se Vishwa Shanti, from inner peace to world peace, and the famous bhajan Vaishnava Janato, written by the 15th century poet-composer Narsingh Mehta. The song inspires us to be compassionate and inclusive and one with the whole world. The composition also has refrains of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Kirtan tradition. Two classical dance forms, the Kuchipudi of South India and the Kathak of North India, will blend in a choreographed presentation. This anthem has been directed by Shorendro and Shomujit and features Leslie Lewis, Sadhna Sargam, Shweta Mohan, Mangli, Iman Chakraborty, Shoikot Bishash, and Tirtho Bhattacharya. The dance choreography is by Yashoda Thakur and Sanjay Joshi. Ladies and gentlemen, we present the anthem of the Global Spirituality Mahotsav.
EP. Good to go. Please.
सकल लोकमा सहुड़े वादे नंदा न करे केणी रे सकल लोकमा सहुड़े वादे नंदा न करे केणी रे वाच काचमर गम बदनिदा सा नी 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 धनी रा प प द प म ग म रे ग रे प म सा म ग रे ग ग म म प प द द नी द नी द नी द प द म म वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे उपकार करे पर दुखी उपकार करे मन अभिमान वैष्णव जन को तेरे करिए पीड़ पराई So after that mesmerizing performance, we have something more scintillating in store for you. A technologically advanced and enhanced projection mapping. Please hold your breath for the projection mapping. Taking out of monitors, one thing taking out of monitors. Just keep on your shout. Onto your seats tightly. Welcome to the Global Spirituality Mahotsav 2024. Shanti.
Shanti, Shanti, Shanti. The Vedas and Upanishads were humanity's first steps towards spiritual evolution. The Vedic verses held subtle techniques that ignited deep feelings, tuned the body and mind to rise to a higher vibration, a state of enlightened bliss. The most invocative of prayers, the Gayatri Mantra, was chanted to the rising sun, a meditative start to the day. You are the effulgent sun. I meditate upon you with reverence. May you enlighten my mind. Sage Patanjali encapsulated the spirit of yoga. Yoga chitta vritti nirodha tada drashtuhu swarupe vasthanam. The true purpose of yoga is to dissolve the noise of endless thought. When the mind is quiet and focused, it begins to sense truth within. Hundreds of millions of yoga practitioners across the world discover stillness and silence in this sadhana every day. Indian masters devised many pathways to reach the goal. Sage Vyasa designed the concept of Karma Yoga in the Bhagavad Gita. He demonstrated how a Karma Yogi could be at peace even in times of intense conflict. The protagonist Lord Krishna teaches the warrior Arjuna to fight with equanimity and remain in a state of bliss even at the moment of death. In 600 BC, Mahavira, the 24th Tirthankara, Jainism with its purity and poise. He taught the 5 vows of non-violence, truthfulness, non-covetousness, chastity, and non-attachment. In 500 BC, Buddha evolved his 8-fold paths to nirvana, a beautiful prescription of right view, speech, conduct, resolve, livelihood, effort, mindfulness, and samadhi. This 8-spoke wheel of dharma rolled across South Asia. Around the 4th century BC, Adi Shankara conceptualized Advaita Vedanta. His teachings are quoted even today by quantum physicists, mathematicians, and philosophers. Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. When you identify with your own blissful consciousness, you merge with the universal truth of existence.
1580, Guru Nanak inspired Sikhism, created a path replete with the spirit of self-sacrifice and surrender. The Bhakti movement took Antarik Shanti into the domain of pure love. Bhakti Yoga was all about surrender amidst a state of grace. The tradition of Meera and her bhajans still reverberate in the hearts of 1 billion people. Every performing art of India has a secret link to bliss. The purpose of dance and music is to discover joy in action, the artist often getting in a flow state, merging with the spirit within. Nadopasana, the meditative act of deep listening, could lead you to rapturous joy. Whether it's the sound of music or simply the sounds of nature, deep listening can lead to blissful joy. Indian masters across the ages treaded paths of inner peace that reached the far corners of the globe. As Swami Vivekananda, addressing the World Parliament of Religions at Chicago in 1893 said, "I am proud to belong to a nation which taught the world tolerance and universal acceptance." The 19th century marked the proliferation of a new generation of masters. Ramakrishna Paramahamsa, Sri Aurobindo, Swami Vivekananda, Babuji Maharaj, Ramana Maharshi, Jiddu Krishnamurti, Mahesh Yogi, and so many others, each taking the torch forward and serving as global ambassadors of inner peace. In the 19th century, the Baha'i faith introduced the world to peace and bliss through human values of togetherness and love. World peace can only happen when inner peace dawns in the hearts of a critical mass of people. India has long been a Vishwaguru, a world teacher, spreading the light of bliss as an antidote to the venom of intolerance. The Global Spirituality Mahotsav is a step forward in the evolution of Indian spirituality into a global phenomenon. We salute the efforts of thousands of spiritual masters who are contributing selflessly to this noble cause. Like the roots of a vast banyan tree that hold the soil from being washed away, our masters, each unto themselves, serve to hold the fabric of society from crumbling. Now and forever, India shall remain at the forefront of this noble endeavor.
Om Shanti Shantihi. So we have come to the fag end of this evening. May I now request all of you to please rise for the national anthem. Jai Hind. May I please request everybody to please be seated as our Honorable President is leaving the premises. कृपया करके सभी से निवेदन है कि आप बैठ जाएं. राष्ट्रपति जी यहाँ से पधार रहे हैं. Please be seated just for a few seconds. The cultural program will proceed further. Please be seated. The President is on the way out. Request you to kindly take your seats. Do not vacate, someone else will grab it. The cultural program is about to begin in exactly 5 minutes from now. And I can promise you that you'll have a great time watching it. Brothers and sisters, please be seated. सभी ब्रदर सिस्टर से निवेदन है कि प्लीज़ कृपया बैठ जाइए. कल्चरल प्रोग्राम बस सब आर्टिस्ट सामने आ रहे हैं आपके. बस थोड़ी देर का बहुत ही शानदार बेहतरीन सुर की संध्या या प्रोग्राम आपके सामने देखने वाला है विद बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, मशहूर कलाकार who have come all the way from different parts of India. We have Leslie Lewis sir, Sadhna Sargam ji, Ni Telangana ki Mangli, Shweta Mohan, all the artists are here. Please, I request all of you all to please be seated. దయచేసి అందరు కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ మొదలు తెస్తున్నాము. సురకి సంధ్య అనే కార్యక్రమం తర్వాత మీరందరూ అప్పుడు బయలుదేరొచ్చు. May I request all of you all to please be seated. Thank you. The program is just about to begin.
As you can see, all the artists are on stage. Request you to kindly take your seats. Please take your seats. Otherwise, you're going to miss out something. Ladies and gentlemen, welcome to this evening's musical presentation, Sur Ki Sadhna. This specially curated production, created to celebrate the Global Spirituality Mahotsav, includes songs and hymns by the poets and mystics of the different faiths and beliefs across centuries, cultures, and languages. Religious music has been an integral part of our culture from ancient times. In the words of Rabindranath Tagore, "Thou stands on the other shore of my song touches thy feet." We will begin with a composition by the 16th century celebrated Bhakti saint and mystic poet and devotee of Lord Krishna, Mirabai. Having been blessed with Lord Rama's name by her guru, Meera says, "What he has given me is priceless. This is one wealth which cannot become lesser by giving, which no robber can steal. Day by day, it increases in value." The song will be presented by Shomujit. नमस्कार भाई और बहनों, हमें अत्यंत आनंद है आज इस सुंदर संध्या में अपनी सुर की जो साधना है वो आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। As said, we would be starting with a Meera bhajan and celebrate Meera and her philosophy in this evening. I would request, please, if you could sit down, that would really inspire us. और जो बैठे हुए हैं उन सब से मेरी यही दरखास्त है, गुजारिश है कि जब हम गाए तो आप भी साथ गाइए। आप गाएंगे? हमें सुनाई नहीं दिया यहाँ। आप गाएंगे? संगीत है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सबको मालूम है। आया है तो जाएगा, तो सोचो अभिमानी मन। चेतो अब चेतो दिवस तेरो निराना है। कर से करुदान मान जब मुख से राम नाम। कर से करुदान मान जब मुख से राम नाम। वही दिल आवे काम जाहिद न जाना है। अब जाहिद न जाना है, जाहिद न जाना है। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ओ राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो रे राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमूलिक दे मेरे सद्गुरु वस्तु अमूलिक दे मेरे सद्गुरु वस्तु अमूलिक दे मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो हे राम राम जय राम राम हे राम राम जय राम राम हे राम राम जय राम राम जय 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 राम राम हे राम राम जय राम राम जय राम जय राम मीरा के प्रभु Baba 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 nire nire ga 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 ma 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 da ga ga ni sari ra ba ma da ba ma sari ra ba ma re ga sa मीरा के प्रभु गिरधर ना कर मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर ना कर हरक हरक जस का हरक हरक जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो 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 रे पायो धन्यवाद। अभी आगे और भी कुछ गीत आपके सामने प्रस्तुत होंगे और कई कलाकार आएंगे यहाँ पे। हमने आज संध्या कुछ इस प्रकार सजाया है कि सारे धर्म के जो संगीत है उनको लेके एक
एक बस माला पिरोने की हमारी चेष्टा है। उम्मीद है आप सबको पसंद आए और आप बस अपने तालियों के साथ हमारी जो उत्साह है वो बढ़ाते रहे। थैंक यू। एक बार मैं जाने से पहले आपको परिचय करवा दूं। विश्वजीत रॉय हैं तबले पर, कल्याण मजुमदार सितार, सरोद पर शौर्णेंदु, शोमुज्योति बांसुरी पर, इलेक्ट्रिक गिटार पर सनी, हिमाद्री है बेस गिटार पर, गोबलो है, हमारे यहाँ एक प्यारे क्वायर टीम है, शोरिंद्रो पियानो पर है, अनंत जी वायलिन पर है और विष्णु मृदंगम पर है और अपू हिमाद्री है ड्रम्स पर। धन्यवाद। Our next presentation is one of Tyagaraja's most famous kirtanams. In this composition, Sri Tyagaraja Swami pleads with Lord Rama to give him the job of being his guard, symbolically expressing a desire to be near Lord Ram always. Presented by Shweta Mohan, dance choreography is by Yashoda Thakur. అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? It's a matter of great privilege and honor to be performing at this historical event today in front of this esteemed gathering. All thanks to this dynamic duo, Shri Shaurendra ji and Shomojit ji and the Ministry of Culture. Thank you for having us here. And today we present to you one of the most popular compositions of Saint Tyagaraja, who is one in the musical trinity of Carnatic music. Hope you all enjoy it, and thank you once again for the opportunity. Rama
Sri Ramakrishna had said, as many faiths, that many paths, all leading to salvation in their own way. The next presentation is a contemporary composition on unity of all faiths that uses a century-old refrain. Integrated into the composition are Buddhist chants, kirtan, and Shabad Geet. The song implores Lord Krishna to come as soon as possible. Written, composed, and presented by Leslie Lewis. Good evening. It's so special to be here. I want to thank the Ministry of Culture, Daji, all the wonderful people who've come from all over the world for one reason, just the heart. You know, the heartfulness. All you guys are amazing. And I want to thank all of you for coming here tonight. And one more special duo, which I think needs to be mentioned, is Surondo and Shomyojit, who have requested me to come here. So I'm going to do this song especially for you tonight. I'm really happy to be here tonight. Come back as Jesus, and come back and save the world, and bless all the future of every boy and girl. And come back as Rama, forgive us for what we've done. And come back as Allah, come back as anyone. Krishna ni begane, Baru Krishna ni begane, Baru darkness coming round, and everybody fighting with the everybody wants control, don't hesitate to kill one another. So come down and help us, save all the little ones. They need a teacher, you are the only one that we can rely on to build a better world. The children, a world that's for everyone. Krishna ni begane, Baru Krishna ni begane, Baru. Sharanam Gacchami, Dhammam
The next presentation is Shiva Stotram. The composition describes the beauty and power of Lord Shiva. Chanting the stotram helps to purify the mind and body, remove negative energy, and bring inner strength and peace and happiness in the devotee's life. Lyrics of the song is by Matla Tirupati, composed by S.K. Bhaji and presented by Sangeet Natak Academy awardee Mangli. అందరికీ నమస్కారం బాగున్నారా అందరూ सबको नमस्कार मैं हूँ आप मंगली थैंक यू सो मच आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव my heartfelt gratitude to Kamlesh Sri Kamlesh Daji ji for this divine initiative. Thank you so much. Thanks a lot. ఎండికొండాలు ఏలేటోడా అట్టపొట్టు శంకరుడా చోలే పట్టుకొని తిరిగేటోడా జగాలను సజంగముడా కంఠాన గరళాన్ని దాసినోడా కట్టి చూపుతో సృష్టిని నడిపెట్టోడా ఆది అంతాలు లేనివాడా అండపిండ బ్రహ్మాండాలు నిండినోడా నాగభరణుడా నంది వాహనుడా కేదారి నాథుడా కాశీ విశ్వేశ్వరుడా భీమశంకరా శ్రీకాళేశ్వర మహారాజ రాజేశ్వర ఎన్నికొండాలు వేరేటోడా అడ్డబొట్టు శంకరుడా చోర పట్టుకొని తిరిగేటోడా జగాలను సజంగముడా కఠాన గరళాన్ని దాసినోడా కంటి చూపుతో సృష్టిని నడిపే
Thanks a lot once again. Thank you, Kamlesh Daji. Thank you. Thank you so much for having me. Thanks for inviting me. Thank you. The next presentation is a well-known Sufi kalam written by the 14th century mystic Amir Khusro, depicting the joy of uniting with the Almighty. Sufism believes in reaching God through devotion and love. The theme of the composition, the absolute power of a mere glance from the divine, is a central theme in Sufi mystic literature. Presented by Imon Chakraborty and Shoikat Bishash, dance choreography is by Sanjay Joshi. Namaste. Myself Imon, and I'm performing with my brother Shoikat. I have never performed here before and never ever thought of perform my song in front of Daji. Thank you so much for having us, sir. Thanks to the Ministry of Culture for giving us this opportunity. And I'm new to all of you. I need all of your support. Please be with us.
The lyrics of our next presentation by Javed Akhtar is structured like a prayer hymn and is an appeal to God, the protector, the preserver, the Lord and Master, to give people strength and patience. The song has been interspersed with the bound philosophy of universal brotherhood through the songs of Lalan Fakir and Shah Abdul Karim, presented by Sadhna Sargam and Tirtho Bhattacharya. हार्टफुलनेस मेडिटेशन के वैश्विक गुरु आदरणीय दाजी, परम पूजनीय आदरणीय श्रद्धेय सभी संतजन, गुरुजन और आप सबको मेरा नमस्कार। इतने ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव के इतने शानदार आयोजन में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ सांस्कृतिक विभाग भारत सरकार की भी, आप सबकी भी बहुत बहुत धन्यवाद। কাষ্ঠেরো নৌকাখানি রূপকাষ্ঠেরো নৌকাখানি সেই নৌকায় না যাবি নবীর নৌকাতে আয় পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে
As we come to the end of this program, I would like to invite the artists on stage, the directors of this program, Shorendro, Shomujit, the artists, Leslie Lewis, Shweta Mohan, Mangli, Iman Chakraborty, Shoikat Bishash, and Sadhna Sargam and Tirtho Baul are already on stage. The dance choreographers of this evening's program, Yashoda Thakur and Sanjay Joshi. We thank everybody for giving us this beautiful evening, and we thank you, the audience, for being such a receptive and such a participating audience. As we end this program, we have a little surprise for you. We have requested Mangli to sing a few more songs for you, and she will be coming on stage now to sing for you. So Mangli, it's now over to you. Actually, we should all give Mangli a big clap because she has agreed only because you all have requested her. And she has said that she'll sing one more song. Are you giving me the number, bro? IM number? Okay. Stage 1 only. Stage 2, I have the output cards playing, right? Okay. 13, 14? Okay, cool. Hello, hello, check. Thank you so much for your love. Thanks a lot.
సో సారీ, కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను పాడలేకపోతున్నా. కానీ మీ అందరి కోసం ఒక 4 లైన్స్ మీ అందరి కోసం పాడబోతున్నా. సో సో లార్డ్ శివ సాంగ్. ఓ గిరి సురాసుత గౌరీ సఖి అయి నీ తోడుండా సంకాజోలే శంకు పుర్రే నీకు పుదండా రంగులీనే నాగమణి మెడలోన వెలుగుచుండా ఏమీ లేని భైరాగోలే ఆచించుచుండా వెన్నెలనే తలపై కొలువై చింతోలాడా ఎందుకురా బూడిద నీ నొసట గిరిజనమే నీకు బంధువులైరి రాసిరులున్న మురువము చిత్రమురా కలిమిలేమి కష్టము సుఖము ఓ నీ తూకములో అంతా ఒకటే అఖిలాండం బ్రహ్మాండం నీ తాండవమే అతల సుతల పాతాళం నీ కీర్తనమే ఓహో పగలు రేయి తీరాలకు వారధి నీవే ప్రళయ విలయ గమనాలకు సారథి నీవే సాధు జంగమా ఆదిదేవుడా శంభో శంకర హరలింగ రూపుడా హర హర మహాదేవ శంకర హర హర మహాదేవ శంకర హర హర మహాదేవ శంకర హర హర మహాదేవ శంకర. Thank you so much. Thanks a lot. Love you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Daji. Thank you so much. Thank you so much, Gauri Basu ma'am and all the complete team of Surki Sadhana. I think you all can proceed towards the dining halls. Please split slowly and dheere se aap us taraf se chaliye. Please do not create any kind of a chaos. May I request all of you all to please dheere se us taraf aap aage badhiye towards the dining hall. There are a lot of different locations where the dining arrangements have been made. I'm sure you all know that tomorrow, 16th March, Saturday, we have the yoga and meditation sessions. And the sessions will start from morning 6:30 a.m. to 7:15 a.m. This is meditation with Rajvi Mehta ji. Then we have the main plenary session, Confluence of Pathways for Inner Peace to World Peace, here at the main meditation hall from 9:15 a.m. to 10:30 a.m. We have wonderful speakers who are going to address tomorrow. We have Shri Abhijit Haldarji. We have address by Cardinal Anthony Pulaji. We also have an address by Dr. Imam Umair Ahmed ji. Bhikkhu Sangsena ji. We also have Sadguru Shri Riteshwar ji. Adaniya Atmaprit Vidhi ji, D.S. Anand ji, Baba Jain ji. And the second session is about being and becoming. The second plenary session starts at 10:30 a.m. up to 12 p.m. And here we have Yogi B.K. Mrutyunjaya ji, Swami Bodhamayananda ji, Acharya Swami Mitrananda Saraswati ji. We also have the spiritual orator Jaya Kishori ji, Kabir Bedi ji, Maharaja Dr. Tony Nadar ji, and also an excellent film personality Shri Shekhar Kapoor ji.
So let's have these wisdom sessions tomorrow. Please join us once again for the third successful day of the Global Spirituality Mahotsav. 16th March, tomorrow at Saturday here at the same hall. Thank you. Shubhratri. Good night. This is Gayatri Rao signing off.